sudden loss of renal function, and that most of time is reversible. That most of time is reversible. Most patients of acute renal failure, they recover. And particularly if cause is pre-renal, as I told you, pre-renal causes, post-renal causes. In pre-renal causes, prognosis excellent. So our most patients of acute renal failure, they recover. Today, my dear student, topic is chronic renal failure. In chronic renal failure, there is a gradual loss. There is a gradual loss of renal function. And that is irreversible loss. Gradual loss of renal function resulting into accumulation of the nitrogenous waste products, toxins, excess of fluid in the body, and that usually or invariably is irreversible. Irreversible. So acute renal failure is reversible, chronic failure is irreversible, and it is a gradual in arteries. What is chronic failure is also called the CKD, chronic kidney disease. And there are 5 stages of chronic renal failure, stage 1 to stage 5. This stage 5 is called also the end stage renal failure, because this is the stage where patients require RRT, renal replacement therapy, either in the form of dialysis or in the form of transplant, renal transplant. So end stage renal failure patient is stage 5 patient. What is stage 1? We have divided these stages according to the GFR. You know, normal our GFR is almost 100 to 120 milliliters per minute. So what is stage 1? When GFR is from 60 to 90. Stage 2, when GFR is from 45 to 59 milliliter per minute. Stage 2 from 45 to 59 milliliter per minute. Stage 3 from 30 to 45 milliliter per minute. Stage 4 from 29 to 15 or 15 to 29. And what is stage 5? When GFR is now less than 15 milliliter. When GFR is less than 15 milliliter, then patient require either dialysis or renal transplant. What is importance of CRF? It is a common problem. How much it is a common? 1 to 10. Suppose we are 10 persons sitting here, one has renal failure. Suppose somewhere are sitting 100 persons, among 100, 10 persons are suffering from renal failure. But fortunately, up to the stage 3, this is without clinical feature. That's why renal failure is also called the silent killer. In our medicine, 2 diseases are called the silent killer. One is hypertension and other is renal failure. Up to stage 3, patient doesn't know I am suffering from renal failure, so I should go for my treatment. It is stage 4 where patient become mildly symptomatic. And in stage 5, of course, which is also called end-stage renal failure, patient is very symptomatic. That's why patient require immediate dialysis or transplant. So there are 5 stages, and importance is it is a common problem. How much common? 1 in 10. In 10% of society, 1 is suffering from CRF. But patient doesn't know. That's why it is called the silent killer. And other importance of this disease, renal failure, is it is a life-threatening. It is a life-threatening disorder. If not diagnosed early, if not cured early, then it is, you see, even it cannot be cured. By treatment, we can just stop the progression of stage from 1 to 2, or from 2 to 3, or from 3 to 4. Once the patient is in stage 4, even treatment can't do anything.
So early intervention is very important in this disease. So definition is so important. This patient is having life-threatening disorder. When it is past stage 4, then disease is a life-threatening. Many patients daily are dying because of uremia, acute uremia or chronic uremia. Okay, so this has to be understood. What are the causes of cranial failure? We have common causes, we have uncommon causes. In examination, you are supposed to tell the things in beautiful way. Not in first common causes, then uncommon causes, then rare causes. But what we see in exam, patient tell us first uncommon causes. Suppose what is cause of hepatitis or what is cause of cirrhosis liver? Sir, hemochromatosis. Oh my dear, hemochromatosis is not common cause. I myself has only seen 10 cases in my 30 years of practical life of hemochromatosis causing the cirrhosis liver. And exam students are telling hemochromatosis is number 1 cause of the cirrhosis liver. No. Post-infectious hepatitis, post-viral infectious hepatitis is the most common cause. Then alcohol is another second common cause. So, बताना जो है ना, बताने के नंबर है कि आप बताते किस तरह हैं. पढ़ा तो अच्छा शगुफ्ता ने भी, शैला ने भी बताया, दोनों ने भी, लेकिन शैला जो ना अच्छे नंबर ले गई शगुफ्ता से, क्योंकि उसका बताने का स्टाइल बहुत अच्छा था. उसने कॉमन पहले बताया, अनकॉमन बाद में बताया, और फिर वॉइस का उतार चढ़ाव जो इम्पोर्टेंट है उस पर जरा थोड़ा सा जोर स्ट्रेस देके बताना है, जो अनइम्पोर्टेंट है उस पर थोड़ा सा आप रिलैक्स हो सकते हैं. तो दैट्स व्हाई हाउ good people, good student, even with less study, they can get good numbers. है ना? एक चाय आप ऐसे आके रखें, एक चाय आप प्लेट में रख के और ऊपर से ढकना देके आराम से रखें, तो किसके नंबर से आता है? दूसरे नंबर वाले के. So presentation is very important. How you present yourself, how you see the utter your words. So common causes of cranial failure and uncommon causes of cranial failure. Common causes are number 1, diabetes. Almost in 40% patient of CRF, diabetes is the cause. Number 1 important cause, diabetes mellitus. And then second most common cause is hypertension. And then third common cause is chronic glomerulonephritis. So my dear, look at 90% causes, 40% diabetes, 30% hypertension, 20% chronic glomerulonephritis. So 90% causes of CRF are these 3 causes. Diabetic nephropathy, number 1, hypertension, 30%, diabetic nephropathy, 40%, and then chronic glomerulonephritis, 20%. So my dear, these are the common causes. Uncommon causes are chronic pyelonephritis, chronic interstitial nephritis, renal tumors, renal artery stenosis, and very important, non-steroid anti-inflammatory drugs. These analgesics, called the analgesic abuse nephropathy. Just taking one analgesic or 2 analgesic or analgesic for 1 week or for 1 month doesn't cause the renal failure. Kidneys इतने vulnerable नहीं है कि आपने 2-4 दिन आपने analgesic tablets खा ली और आपके गुर्दे खराब हो गए. No. It is almost for 5 to 10 years when one is taking regularly non-steroid anti-inflammatory drugs like this Ponestan, Brufen, Panadol, mefenamic acid, acetaminophen, aspirin. When one is taking for 5 to 10 years, more than 10 years, 5 years, at least in between 5 to 10 years, commonly more than 10 years, then patient have analgesic abuse nephropathy, an important cause of cranial failure. Those patients who are suffering from arthritis, rheumatoid arthritis, gout, SLE, these are the patients who are compelled, majboor hai bechare,
to take the analgesics. So we should avoid having habit of analgesic. कुछ लोगों की हैबिट्स होती है, थोड़ा सर दर्द हुआ नहीं, थोड़ी थकन हुई नहीं, एनर्जेसिक, और फिर आदत बन जाती है. कभी कभी एनर्जेसिक लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हफ्ते 10 दिन के लिए भी लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है. This is when you are taking regularly for many years, then patient suffering from because of analgesic abuse nephropathy means cranial failure. Okay, my dear. And then chronic intake of Hakim's medication. Hakim medication doesn't only cause renal failure, it also causes cranial failure. So one should avoid Hakim's medication. That time has gone when we were used to take the Hakim's medication. Now this allopathy is available, latest, and research is going on in this allopathy. In Hakim's medication, no more research. वो जो 1000 साल पहले दवाई थी आज भी वही उस काम के लिए है, 100 साल पहले जिस काम के लिए बताई गई थी वो उसी की है, और वही गिनी चुनी दवाई है. So avoid the Hakim's medication. Hakim medication is again a cause of chronic renal failure. So these are, my dear, uncommon causes. Must remember common causes: diabetes in 40% of cases, hypertension in 30% of cases, chronic rhinopharyngite in 20% of cases. You see, you have to tell smartly. In order to have a smart numbers in exam, in every exam, you have to be smart. Not smart, not in looking, smart in speaking. Your words should be more smart. These are the words. Your words tell us or tell anybody who he is, how he is, what is his age value. कहते हैं ना, बंदा ज़बान के नीचे छुपा हुआ है, बंदा ज़बान के नीचे छुपा हुआ है. आप बोलते हैं, हम बोलते हैं, हमारे बोलने से हमारी कदर का पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने वेल मैनर्ड हैं, हम कितने वेल एटिकेटेड हैं, और हम कितने हसास या गैर हसास आदमी हैं, और कितने रिस्पॉन्सिबल और इररेस्पॉन्सिबल आदमी हैं. तो अपने बोलने को अच्छी तरह, तभी तो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो. थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक. मशहूर इडियम है, आप लोगों ने सुनी होगी, थिंक ट्वाइस बिफोर यू, बट आई विल से थिंक थ्राइस बिफोर यू स्पीक. ये बोलना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोला हुआ लफ्ज कभी वापस नहीं आता, कभी वापस नहीं आता. वक्त और बोला हुआ लफ्ज कभी वापस नहीं आते. तो अपने टाइम की भी कदर करो और सोच समझ के बोलना चाहिए. एग्जाम में तो वो सोच समझ के बोलना. इस 5-10 मिनट की वाहवा में पता आपने नंबर लेने हैं, अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है. तो one has to be very careful. So causes are common causes and uncommon causes. Then what are the clinical features of the cranial failure? As I told you, most of the time, clinical feature of cranial failure is almost nothing. Patient is asymptomatic up to the stage 3, and main bulk of the patient is up to stage 3. Most patient number 1 are in stage 1, then according to quantity of the patient in stage 2, then in stage 3, then some patients are in stage 4, and few patients are in stage 5. But this few patients in stage 5 are all over the world in millions. They are either on dialysis or they have gone through renal transplant. So majority is asymptomatic. That's why it is called the silent killer. As patient stage progress, patient start to have the symptoms. When is stage 3? Stage 3 again we have divided stage 3A, stage 3B. Stage 3A for asymptomatic. Stage 3B, patient is either having ankle edema and or periorbital edema, and patient can have hypertension. May not be having, but can have hypertension in stage 3B. This is stage 4, where patient is really symptomatic. Patient has, as I told you, all system can get involved.
But most common system involved is GIT. Every system of the body, central nervous system, respiratory system, musculoskeletal system, cardiovascular system, GIT system, every system must, every skin, genitourinary system, endocrine system, every system is involved. But most common system involved is GIT. And this is in stage 4, patients start to complain of nausea, vomiting, hiccup, anorexia, epigastric pain, abdominal pain. This nausea, vomiting, anorexia is more common. So this patient start to now have the symptoms. And when patient has involvement of the respiratory system, then patient can have the dyspnea, patient can have acidotic breathing. When patient has involvement of the CNS, patient can have irrelevant talk, abusive talk, patient may become semi-unconscious, total unconscious, comatose. Patient can have a convulsions called the urinary Patient can have a chest pain, pain like a pain of the myocardial infarction due to uremic pericarditis. Patient can have a pruritus because involvement of the skin. Look, even skin is not spared off. Even hairs are not spared off. There is falling of hairs. Patient can have a dryness of skin called the xerosis. Xerosis, Xerosis. Dry skin is called the xerosis. In uremia, patient can have a xerosis. This is xerosis, again, one of the factors which is responsible for pruritus. And sometimes patient has so much pruritus, कि सामने अगर वो चाकू भी पड़ा हुआ है, छुरी भी पड़ी हुई है, कोई पॉइंटेड चीज भी पड़ी हुई है, उससे वो अपने आप को वो pruritus के लिए इस्तेमाल करेगा. That's why many patients have a scratching marks because of pruritus. Even sometimes there's a bleeding from these scratching marks. Sometimes so severe patient has pruritus. Patient has a generalized weakness. Patient energy level is very low. Patient even can't go in advanced cases from bedroom to bathroom. From bed to bathroom, he can't go. Or he has to take the support. पहले ही भूख कम लग रही है, वो भी कमजोर कर रही है, और फिर ये यूरीमिया है, ये मसल वीकनेस करती है, musculoskeletal weakness करती है. Patient is unable to go anywhere. He always like to remain on bed and close his eyes. So you see the cumbersome to see the things. So what I mean to say, every system can get involved. Patient can have oliguria. Patient can have anuria. There are 10% only patients who have normal urine output. Otherwise, 90% patient has oliguria or anuria. Most of the time, oliguria. There must be question comes in your mind when patient has normal urine output in 10% of cases, then why patient is having the clinical feature when he is passing normal urine? My dear, this normal urine is normal only in quantity, not normal in quality. जैसे हम एक नमाज पढ़े और कोई पता नहीं कि हम किसके सामने पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी पहली रकात में सूरत पढ़ी, उस नमाज की कोई क्वालिटी नहीं है. नमाज पढ़ने के बाद आप पूछो पहली रकात में क्या पढ़ा, दूसरे में क्या पढ़ा, जी मुझे तो पता ही नहीं, दुआ में क्या मांगा, जी मुझे तो याद ही नहीं. तो मीन्स क्वालिटी इज नॉट गुड. So this is a quality which is counted. Okay, my dear, अल्लाह आपकी क्वालिटी को देखता है कि आप ये कितने नेक अमल लेके आए हो. नहीं 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 नहीं, कितने अच्छे अमल लेके आए हो. दिस इज इम्पोर्टेंट. एफर्ट्स देखे जाते हैं, क्वालिटी देखी जाती है. क्वांटिटी कम भी हो, क्वालिटी अगर अच्छी है तो इट इज गुड. चाय के आप 2 कप पी लें लेकिन अच्छे नहीं है, कोको कोला के अच्छे पी लें, ठंडी नहीं है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, आपको मजा नहीं आएगा. चाय का एक कप पी लें, अच्छी क्वालिटी की चाय है, आधा कप ही आपको जबरदस्त मजा देगा. जिसको ट्रक चाय कहते हैं, ट्रक ड्राइवर हमारे पीते हैं, जो बंदे की लेवल हाई एनर्जी लेवल को बहुत हाई कर देती है, जिसको स्ट्रॉन्ग टी भी कहते हैं, पता नहीं और भी है. तो व्हाट आई नीड टू से, क्वालिटी. You make your quality better and better. People see, even Allah see quality of your deeds.
not quantity deeds. आपने जो है ना खुद नुमाई के लिए नेक अमल किए हुए कि दूसरे लोग नेक समझे, हमने किए हुए, मैंने किए हुए, तो उनकी कोई वो मेरे मुंह पे मारे जाएंगे। ये नमाज तो आपने लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी, ये सखी तो आप लोगों को दिखाने के लिए आप खैर खैरात करते नहीं, वो जो अल्लाह के लिए आप करें, बगैर रियाकारी के लिए करें, किसी को बताएं भी नहीं, वो है नेकी, वो है क्वालिटी जो अल्लाह को पसंद है। तो टीचिंग में भी, रीडिंग में भी, स्टडी में भी स्टूडेंट की एक क्वालिटी होती है। अच्छा क्वालिटी वाला स्टूडेंट हमें 5 में से अगर 2 सवाल भी अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से बताए ना, 3 न भी बताए, even he is pass, not only pass, he is pass in good numbers, he is pass in good numbers। तो अपनी क्वालिटी को, अपने बोलने की क्वालिटी को, अपनी थिंकिंग की क्वालिटी को अच्छा, और कई चीजें हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर करें। तो दिस इज क्वालिटी, quality which is count, not quantity. So my dear, every system is involved. How we can diagnose cranial failure? From history, from examination, from investigation. And what is our aim when we are taking history or examination the patient and taking the blood for the investigation? Our aim is my patient suffering from renal failure or cranial failure? Number 1. Number 2, what is the cause of cranial failure? And number 3, very important, what is the severity of the cranial failure? If a patient is in stage 5, GFR is less than 15 milliliter per minute, we have to go for immediate dialysis. And then we will try to arrange transplant. Particularly if the patient is in between 20 and 60 years of age, or even 15 years to 60 years of age, then ideal treatment is transplant. If he is not fit for transplant, or donor is not available, or is below the age of 15 or above the age of 60 years, then dialysis is the only option. This is for the severe cases. This is for stage 5 patient of cases. So this is history examination and investigation, which tells us what is the severity. And we have to go according to the severity and the cause. This treatment, causes of treatment, is good enough up to stage 3 or even up to stage 4. Once patient is in stage 4 or in stage 5, even now cause of treatment can't do anything. Because in beginning, as I told you, cranial failure is irreversible. जो डैमेज हो चुका वो हो चुका। ट्रीटमेंट जो है प्रोग्रेशन को डिले कर सकती है, स्टेज 2 से स्टेज 3 को डिले कर सकती है, स्टॉप नहीं कर सकती, डिले कर सकती है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ cranial failure is important. Investigation, which we send urea, blood urea. This is a question in Viva. What investigation you would like to send in patient of CRF, stage 3 or stage 2 or stage 5, or without naming the stage. So you must know what are the investigation to diagnose cranial failure. Urea creatinine. They will not only tell us about the presence of disease, but also the severity of the disease. अब एक बंदे का यूरिया 100 मिलीग्राम है, नॉर्मल होता है 10 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एक पेशेंट का यूरिया 100 है, एक का 300 है, तो किसको सीवियर यूरिमिया है, किसको सीवियर सीआरएफ है? जिसका 300 है। एक का क्रिएटिनिन जो है ना 5 है, नॉर्मल इज अप टू 0.5 to 1.5 मिलीग्राम। एक का क्रिएटिनिन 5 मिलीग्राम और एक का 15 मिलीग्राम है, तो who is more serious? Certainly 15 milligram, where we require immediate dialysis. So these investigations also tell us about the severity of the disease. Blood urea, serum creatinine, serum electrolytes, particularly potassium. Hyperkalemia is present most of the time, not hypokalemia. If patient has a severe vomiting or diarrhea, then of course he can have a normokalemia or even hypokalemia. Most of the time patient is having hyperkalemia.
And hyperkalemia is again life-threatening condition where patient require dialysis. Then X-ray chest to rule out pulmonary edema and pulmonary effusion. Patient can have a cardiomegaly because of uremic cardiomyopathy. Cardiomegaly because of uremic cardiomyopathy. Patient can have pulmonary effusion. Patient can have pulmonary edema. Again, a serious disorder, pulmonary edema. X-ray chest. CBC. Hemoglobin most of time is low. Low. Even maybe very low. Patient require immediate blood transfusion. Hemoglobin. Yesterday, as I told you, 90% erythropoietin comes from kidney. 10% comes from liver. So once kidneys are failed, no more erythropoietin. No more synthesis of the RBC and the hemoglobin. Formation of RBC and synthesis of hemoglobin. So patient is having anemia. And anemia is a syndrome. In anemia, again, every system is involved. Anemia complicates many things. And avoid anemia. You girls particularly avoid anemia. Must take tablet containing iron and this B-complex vitamins and minerals. One should take daily. Either is male or female, particularly females one. So this anemia, one should avoid. Anemia is a syndrome. It can complicate many things. So hemoglobin and then ESR. In this patient, CRF, ESR is very high. Even ESR more than 100. There are only 4 conditions where ESR can be more than 100. Mind it, normally is 5 to 15. In female, even lesser. But there are only 4 conditions where ESR more than 100. This is again a Viva question. Tell me the condition where ESR is more than 100. Number 1 is tuberculosis. Number 2 is cranial failure. Number 3 is these lymphomas, Hodgkin lymphomas and non-Hodgkin lymphomas and leukemias. And number 4, of course, connective tissue disorder like rheumatoid arthritis, SLE. These are the conditions where ESR can be. This we ask the question from those students whom we want to give the very good numbers, who has given us impression that they are very good students. So ESR, then ECG, to see the patient is having hyperkalemic changes in ECG or not. Okay, my dear. So these are the investigation we are supposed to do. Then, of course, treatment. What is the treatment of the cranial failure? Again, depend on severity and cause. If in the early stage, stage 1, 2, or even stage 3, causes to treatment is very important. Causes to treatment is very important. If causes diabetes, control this sugar or her sugar very well. Motivate your patient. हम नहीं करते मोटिवेट अपने पेशेंट को, जैसे हम अपने स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं करते, पढ़ो 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 बस ऐसे नहीं, उनको मोटिवेट करें। कैसे पढ़ा जाए? पढ़ने में क्या इंपॉर्टेंस है? पढ़ने की आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है? So we have to motivate our patient. We have to motivate our patient's relatives. Why patient take daily anti-diabetic drug or anti-hypertensive drug? उसको आप बताएं। जैसे कुरान पाक में बताया हुआ है नमाज क्यों जरूरी है, अच्छे काम क्यों जरूरी है, और बुरे काम क्यों है कि आप न करें, उनसे बचें कि आप जन्नत में जाएंगे। अच्छे काम करेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। ये क्यों बार बार बताया गया है? फिर जन्नत बताया गया, जन्नत में क्या क्या है, दोजख में क्या क्या है, ताकि हम न जाए। ऐसे ही हम अपने पेशेंट को बताएं कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे वाल साहब, अब बाबा जी, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज, बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। उसको मोटिवेट करें, उसको बचाएं, बताएं। हम नहीं देते टाइम, दे दवा ली 5 मिनट में, जब हमने 5 मरीज देखने हैं तो फिर ये नहीं होगा तो क्या होगा? वो अगेन क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। मैंने मरीज तो रोजाना 100 देखता हूँ, लेकिन क्वालिटी के साथ एक मरीज भी नहीं देखा। बेशक मैं मरीज रोजाना 10 देखूं बजाय 100 के, लेकिन क्वालिटी वाले तो देखता हूँ, उनको टाइम तो देता हूँ, हर चीज उनको समझाता हूँ। देखो ये शुगर की दवाई है,
या आपने रोजाना निहार मुंह लेनी है या खाना खाने के बाद लेनी है, उनको इंकरेज करना है। क्यों लेनी है? नहीं लोगे तो क्या होगा, लोगे तो क्या होगा, लोगे तो आपको इंशाल्लाह कोई कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज नहीं होगी, हाइपरटेंशन नहीं होगी। सो माय डियर, वी हैव टू मोटिवेट our patient. So causative treatment. If sugar is under control, if hypertension is a cause, blood pressure is under control, ideal control, then there are very least chances of progression of the disease. So we have to explain and educate the patient. This is very important. Not only patient but relative. कई मरीज ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादा उनके अच्छे रिलेटिव्स होते हैं, इंटेलिजेंट, उनको भी आप करें। बेटियां तो बेचारे अपने बाप का, अपनी माँ का बड़ा ख्याल करती हैं, बीवियां अपने मियाँ का बड़ा ख्याल करती हैं, मियाँ इतने ख्याल नहीं करते। तो ये तो फीमेल जो है ना, अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया है, मोर केयरिंग, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो माँ हो। माँ तो बेचारी वारी जाती है। अल्लाह ने देखो मिसाल दिया है कि मैं एक बंदे से माँ की मोहब्बत से 70 दफा ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। 70 दफा। किसका दिया मिसाल दिया? माँ की मोहब्बत का। तो व्हाट इज करेंसी ऑफ मोहब्बत? माँ की मोहब्बत, वो है करेंसी ऑफ मोहब्बत जो अल्लाह ताला ने जिसकी मिसाल दी कि एक माँ जो जितना अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, मैं अल्लाह उस बंदे से 70 गुना माँ की मोहब्बत से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो हमें भी उस अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। ये जो हमारी फील्ड है ना, ये भी हमारी एक बड़ी प्यारी फील्ड है। इसका हम एम सिर्फ अगर ये बना लें कि ये मैं करके और अपने मरीजों की खिदमत करूंगा, तो हमारा उठना बैठना, हमारा पढ़ना, हमारा पढ़ाई पे खर्चा, ये सारा सवाब में शामिल हो गया। क्योंकि हमने नियत चेंज कर दी ना कि मैंने पढ़ के पैसे नहीं कमाने। पैसे तो वैसे ही भी आएंगे अगर आपकी नियत नहीं भी है पैसे कमाने की। क्योंकि जाहिर है मरीज देखेंगे, कहीं नौकरी करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ना, आपके नसीब का तो कहीं नहीं जाता ना। अगर नियत ये है कि मैं पढ़ के अच्छा डॉक्टर बन के मरीजों का अच्छा इलाज करूंगा, तो 1 घंटा ये आपका पढ़ना जो है ना, ये ज्यादा, आप रात को बैठ के तहज्जुद पढ़ें और उस टाइम पे बैठ के पढ़ें इस नियत के साथ कि मैं पढ़ के मरीजों का अच्छा इलाज करूंगा, तो ये ज्यादा सवाब है। हमारा मजहब है ही हुकूकुल इबाद, 90% हुकूकुल इबाद है, 10% हुकूकुल अल्लाह है।